no, we have just shot. We've just been, we were in Chandigarh to shoot. ते हाले तक सीजन the shooting खत्म की थी. So पूरा post हले बाकी है. So you're playing the lead role, and who's the male part? I think, see, the film is called Heer Unstoppable. I play Heer, but it's a film in totality. Every character is very important. जो मेरा एक भी किरदार है तो मुझे तो मेरी फिल्म है ही नहीं होते. And Neena Ji is playing my mother, which is it has a part which is a mother-daughter relationship, and there is an ensemble cast. There are many other members of the cast. Nanu like we, once I'm ready, being a Chandigarh, then I would love to be back in Chandigarh and do a media premiere with you guys, and then I'll introduce you to my entire cast. मेरा सारा पूरे इंडिया का, but especially पंजाब का ना तो ज़्यादा ड्रीम होता है कि आप बाहर सेटल हो जाइए. ते उस विच कभी-कभी करते हैं नहीं सोचते कि बच्चा जाना चाहता है कि नहीं चाहता, या वाइस वर्सा, कोई सी चीज़ ते कितना कॉम्प्रोमाइज़ ਅਸੀਂ कर जाते हैं अपने कुछ सपनों ਨੂੰ पाना ultimately worth it. वो सब मिलता है जो ਅਸੀਂ सोचते हैं कि बहुत कुछ कोई गवा जाते हैं इन सारे ताने बनाते which मेरी फिल्म है, but on a positive, because as I said, I have always given importance to something that I like. So if I'm it has happened to me many times, in fact, that I was doing a Punjabi film and there was a big Hindi film on hand, but I had given my dates and I stick to the project. That's why maybe you see me less in Bollywood sometimes, right? But yes, Bollywood is something which is national. So every actor or any technician or a creative person wants कि पूरा देश जाने. वो एक ऐसा जरिया हो जाता है when everybody really knows you. But then working in a specific your language is something which makes you stick to your culture. I think it is really what I believe is that when we make films, we cannot preach. हम हर बार हर कहानी में moral नहीं डाल सकते क्योंकि लोग entertainment के लिए आते हैं और आज के जो टाइम है लोगों को वैसे इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में. पर अगर आप उसको थोड़ा सा भी फन में भी कुछ भी मॉरल डालते हो तो लोग फिल्म इंडस्ट्री से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि थिंग्स मेक अ डिफरेंस, राइट? सो इफ यू कुड डू समथिंग नाइस, इट वर्क्स. एंड फॉर द कमिंग जनरेशंस, आई थिंक इफ वी आर नॉट गोइंग टू मेक ओरिजिनल सिनेमा, पीपल आर गोइंग टू प्योरली lose touch with their culture. I think every one of us is all the time speaking in English. And when we go to the other countries like China, they don't speak English, right? हम हमारी लैंग्वेज को नीचे करके पहले दूसरे में बोलते हैं. आई थिंक इट्स अ कम्युनिकेशन वे. अगर हमारे को आता है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ग्रेट. पर अपने कल्चर को भी संभालना ज़रूरी है हमारी जनरेशन के लिए, नहीं तो द नेक्स्ट जनरेशन तो ना नो इट. I don't know how to explain. It's too early to talk about the script. But I think if I say from a director's point of view, it was a role which required a lot of expression. That's what I told all my actors. My film is very less on the lines, it's not something where you come and... मैं पंजाबी च दसांगी. जनता जी ने तो दस ही दिता जी, मैं क्या करूं क्यों नहीं ते उन्होंने स्टोरी बारे सारा दस ही दिता. मैं उन्होंने मदद का रोल प्ले किया और इन्होंने हीर का जो कि मेन थे. बाकी उनकी पंजाब बारे है कि पंजाब के लोग किमें बाहर भेज देंगे ने बेटियां देखते नहीं हैं, उन्होंने सैटल कर लिया बाहर जाके उन्होंने की हुंदा ते बाहर ही शूट की थी नहीं. सॉरी इन्ना मैनू नहीं पता, पर मैंने इन्ना पता है कि मैं जेड़ा मेरा रोल है वो इत्थे दा सी, मैं उत्थे ही कीता और बड़ा मजा आया जनता जी नाल काम करके. मतलब एक फैमिली की तरह No, I'm not disappeared. I think I've always been somebody who is never, or you can say I am somebody who's fortunate कि मैंने हमेशा वो किया है जो मेरे दिल ने चाहा, जो फॉलो करना था. मैंने ज़्यादा जो करना चंगा लगता मैं वो कर दिया. So it's not necessarily, I am doing films as an actor, but this was the time when I wanted to make something of my own, so I was directing this film. So it's not disappearing, it's just that I do, in between I do something which I like more at particular times. So it's always awesome. We were dying to see you. Sweet of you. जोनता जी आई कुछ 100 तो बाद फिल्म डब्बे चला रहे जी. इसका की कारण सब I think पंजाबी सिनेमा साडा ਆਪਾਂ बड़ी बार गल करते हैं ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਪਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, I feel so proud कि
Even Bombay, when we are from my Bollywood friends, everyone is asking, "Oh, तुम्हारी पंजाबी फिल्म फलानी आ रही है, ये हो रही है, वो हो रही है." So Bombay तक पूरी टका के बस है गया. But प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे अनप्रोफेशनल लोग फिल्म बना रहे हैं. मतलब बहुत सारे you can say I think maybe 90-95% people are unprofessionals और new people. फिर उन्होंने की होता है कि उन्होंने perfect technical teams नहीं मिलती and I think वो फिल्म उस लेवल पे बना दे, पैशन ना नहीं बना दे. See, we are the people who think cinema as passion. They only निर्जय देखा जो possibly वो देखना चाहते हैं and reputation बहुत ज़्यादा हो रही है. So that's the reason I think. So ma'am, do you think that passion and love they go hand in hand? Absolutely, yeah. I think when you do anything which is your passion, when you're working in something which is your passion, you don't feel you're working, right? Like normally, we feel कि मेरी 9 to 5 job है या job करनी है घर जाना. But when you're living your passion, you're working in your passion, you are like, man, I don't care. I'm like for the past 3 years when we were shooting, I think we were shooting from 7 in the morning till 1 in the night at times, and nobody's feeling exhausted. Everyone's just doing it, and all the actors, the technical staff, because they're all living their passions. They're in my team, so things become easier. प्रोड्यूसर सी या डायरेक्टर सी एक आवाज ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕभी ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਕਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ. ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਮੰਚ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ. ਮੈਨੂੰ actually बहुत ज़्यादा information है ही नहीं इस बारे, so I'm not supposed to comment, but जे ऐसा हो चुका है तो नहीं कर रहे तब माड़ी गल है. मैं वही कह रही हूँ, it's like the Punjabi community in reality needs to stand together. ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ being Punjabi, but ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆ in comparatively. When I see ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ 'ਚ when you see Bombay industry ਦੀ Bengali counterparts or the Gujarati community, ਉਹ support genuinely ਕਰਦੇ हैं. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. So that's one reason. ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ 100% ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਦੇ ਵੈਰੀ ਲੋਇਲ ਟੂ ਦੇਅਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਬਟ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ. ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋਗ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ. ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ. ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ. I think I should actually say a special thank you to Yogi also here. So and it's मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की गल है that Neena ma'am made her debut, the comeback debut with me, right? So it's an amazing thing, and when you have such senior actors on board, तो वो scenes क्या होते हैं अपने आप बन जाते हैं. उनकी खूबसूरती एक अलग लेवल पे होती है when two good actors are on in frame. So amazing. Career, like we just discussed, right? Everybody wants to go national. The very few people maybe I see who would not consider anything like that, right? Everybody wants to, be, when you are in a creative field, you want maximum people. When you're doing anything creative, you want the maximum people to know about it. So that is okay. But I still say, when anybody, has made a big mark in any region, and when they go national and they forget, that's not good. Because that is the time you should support your what you want to say, your culture maybe more, because that is another way of taking it to another world. Then people, because you kind of represent yourself. So if the Jeev is doing well in Bollywood, so people know more about Punjab. Because if people like him, then people will
see more of it. Like with me, since I'm a Chandigarh boy, born and bred, and I'm, anything happens in the circle of Bollywood, they will say, hey, आपके पंजाब में जाने से ये हुआ. So I'm like, पूरा पंजाब मैं represent नहीं करती हूँ, but this is how it works out. But yeah, it's nice. Story. And the reason of doing this story was, when we talk about today, when we see ourselves, we feel everything is so good. But I have actually seen people, you can say my film is little inspired by the true facts as well. I've been inspired by a lot of reality that I've seen around. In today's world, people who are as modern as maybe I am, as you are, they suffer because of society. And this is what I've tried to show in my film, that even today, 21st century cross कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आज भी in reality, कहीं ना कहीं लोकल नहीं है, लड़कियां सफर करती हैं for one or the other reason. तो उसका रीज़न अपना परिवार भी बहुत because हम लोगों की कंडीशनिंग ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसे कर दो. Usually guys are taught that they shouldn't cry because they are wrong. It's wrong. I don't cry. I feel, my friends, everybody used to say, यार ये तो रोती नहीं है, ये तो एक्सप्रेस ही नहीं करती. Similarly, अगर कोई लड़की बहुत रोती है तो मुझे लगता है मैं लड़कों को I will get fake my heart. This is not what it represents. It's a feeling. If a boy is depressed, he will cry. He has a right. If a girl is depressed, she should cry. So those are the things where we need to be equal, right? Those are the big things to be. On this poster, what do you understand? That is, as a director, I would want to know from you. What do you understand? That is what I Possibly a lot of pain, a lot of loneliness, a lot of pain that she's going through. This poster basically represents the pain that this girl. So that actually that is why that would be discussing. In 21st century, how much we say कि हम बहुत modern हैं, ये है वो है, तब भी हमारी लड़कियों को आज भी बहुत कुछ सहना पड़ता है. ये रियलिटी है. हम मॉडर्न सेटअप में भी बिहाइंड द कर्टन्स बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए. आज भी लोग मे बी बिकॉज ऑफ आर NRI ड्रीम्स या कभी किसी और चीज़ की वजह से हम हमारी खुशियों को पीछे छोड़ जाते हैं और वो चीज़ों के पीछे भागते हैं. तो पता नहीं है हमारी खुशियाँ लाने भी वाले हैं कि नहीं. उसमें रिलेशंस कितना एक दूसरे को रिश्तों को समझते हैं, कई बार कितना मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं. दैट इज व्हाट माय फिल्म इज अबाउट एंड दिस इज व्हाट दिस पोस्टर रिप्रेजेंट्स द पेन एंड आइसोलेशन ऑफ पॉसिबली अ गर्ल हु इज अदरवाइज considered very modern or independent. And the whole concept of the movie is, as we say, it is on the same track that girls are not very much freely recognized in our society or in their own world by their own. No, my film is a little different. It says Heer Unstoppable. So part of my, when it comes to Heer, it is what you said, but when it is unstoppable, this is not what it is. I have tried I have put my protector as, once when you see me for like, she's not somebody who has come to all the bad that is happening to her. The film is, my film is positive, my film is not, I could have been in a zone where it is like all bad. I want to resolve. This is reality that this is happening, but I wanted to resolve. So for my thing, I want women to come up and be stronger and be in life. So it is here to run other way as well. It is not a run-of-the-mill thing. It is a comedy film if I am able to actually convey my thing through it. Even today I feel so sorry कि हम लोग इतने बड़े सिर्फ बाहर जाना चाहते हैं कि कैसे एक्चुअली खुशी होगा नहीं होगा या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. And even till today
they really see. I see so many of my friends who are abroad, when their families back home are still are asking यार iPhone ले आया, ये ले आया, अगले साल गाड़ी लेके देनी है, आज कोई साथ पानी है, पीछे से खत्म हो ही नहीं रही है, you know. So वो सब चीजें कैसे एक लड़की की लाइफ को सेट करती हैं और that is That is a good story. This is what the whole movie is the story is all about. Because the whole thing that they are trying to say in the movie. Some of any real experience